Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 7, Permutation, Combination and Probability. Objective Mathematics for first year. मजीद बुक डिपो वालों की ये बुक परचेज कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा जी. A box containing 10 red, 30 white and 20 black marbles. A marble is drawn at random. Find the probability that it is either रेड और वाइट. ये इस बोर्ड में है हुआ है भाई. नंबर ऑफ रेड मार्बल्स हमारे पास हैं 10, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स हमारे पास हैं 30 और नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स हमारे पास हैं 20. भाई टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमारे पास होंगे 60. लिहाजा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस का 60. ए बी द इवेंट दैट ए ड्रॉन मार्बल इज रेड, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन के 10. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? Number of elements in A divided by number of sample space. By probability of A का अगर number of elements in A divided by number of sample space, we get 1/6. G B be the event that a drawn marble is white, then probability of B number of elements in B का अगर 30. तो probability of B का अगर number of elements in B divided by number of in sample space. By probability of B क्या होगा? number of elements in B divided by number of elements sample space, we get 1/2. But since A and B are mutually exclusive events, लिहाजा probability of A union B क्या होगा? probability of A plus probability of B, so we get 2/3. भाई देखें, A box contains 10 red, 30 white and 20 black marbles. A marble is drawn random. What is the probability that it is either red or white? भैया आपने रेड और वाइट का आपने मामला हल करना है जी. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट आइदर कंटेन्स रेड और वाइट मार्बल्स. जी ए बॉक्स कंटेन्स 10 रेड, 30 वाइट एंड 20 ब्लैक मार्बल्स. ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम. कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर रेड और वाइट. जी नेक्स्ट क्वेश्चन है. ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डीक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. भाई टोटल ताश में 52 कार्ड्स होते हैं. कहते हैं जी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए डायमंड कार्ड और एन एस. भाई इट इज एन डायमंड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए डायमंड कार्ड और एन एस. जी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास 52, नंबर ऑफ इन सैंपल स्पेस का 52. भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस का 52. A be the event that drawn card is the diamond card. तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या होंगे? 13. भाई नंबर ऑफ एलिमेंट डायमंड कितने होते हैं? 13. तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वी गेट 1/4. बी बी द इवेंट दैट ड्रॉन इज एन एस. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी का होगा 4 एस होते हैं. ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वी गेट 1/13. We get 1/13. Since the one diamond card is also an ace card, लिहाजा जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का होगा 1. लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वी गेट 1/52. भाई ए एंड बी आर ओवरलैपिंग इवेंट्स. भाई ए और बी कैन ओवरलैपिंग इवेंट्स. लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. भाई वैल्यूज पुट करना सिंप्लीफाई करेंगे तो बट वी गेट 4/13. भाई वी विल गेट 4/13. जी भाई कहता है ए नेचुरल नंबर इज चूजन आउट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स. भाई ये नेचुरल नंबर इज चूजन out of first 50 natural numbers. What is the probability that the chosen number is a multiple of 3 or of multiple 5? By कहता है what is the probability that the chosen number is a multiple of 3 or of 5? भाई number of elements in sample space होंगे 50. भाई S में हमारे पास एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 up to 50. So number of element sample space 50. A be the event that chosen number is a multiple of 3. जो multiple of 3 होगा वही होगा. तो number of elements in A क्या होगा? 16. लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस.
by probability of A का number of elements in A divided by number of elements sample space, so we get 8 by 25. B be the event that chosen number is a multiple of 5. By multiple of 5 जाएंगे, by 5, 10, तो number of elements in B क्या होंगे 10. लिहाजा probability of B का number of elements in B divided by number of elements sample space, we get 1/5. अब A intersection B करते हैं तो भाई क्या आता है, ये 3 एलिमेंट्स आते हैं. लिहाजा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B 3. लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस, वी गेट 3/15. सिंस A और B आर ओवरलैपिंग इवेंट्स, भाई A और B क्या ओवरलैपिंग इवेंट्स हैं. लिहाजा भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. भाई वैल्यूज पुट करके हल करेंगे तो 23/50 आएगा. भाई 23/50 आएगा जी. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस. एक डाइस को आप 2 दफा फेंकते हो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर ऑफ डॉट्स इज शोज 3 or 11. भाई ये स्पोर्ट में आया हुआ है. भाई ए डाई इज रोल्ड, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस. एक डाई को आप 2 दफा जो है ना वो थ्रो करते हो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर ऑफ डॉट्स shows 3 or 11. G, A die is thrown twice. So then sample space का 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. तो भाई इसकी टोटल जो एलिमेंट्स बनेंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस बनेगा 36. भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस का बनेंगे 36. A be the event that the sum of dots shows 3. भाई A be the event that the sum of numbers of dots shown is 3. तो भाई वो क्या 1 2 2 1. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्या होंगे 2 आएंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. तो भाई 1/18 आंसर आएगा. भाई B be the event that the sum of numbers of dots shows 11. तो भाई वो 5 6 और 6 5. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या होगा 2. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या होगा 2. लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, वी गेट 1/18. सिंस ए एंड बी आर डिसजॉइंट, लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. भाई दोनों की वैल्यूज रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तुम्हारे पास ये आंसर आएगा. ए डाई इज थ्रोन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डॉट्स ऑन द टॉप आर प्राइम नंबर आर odd numbers. जी भाई प्राइम नंबर आर odd numbers. नो प्रॉब्लम. भाई सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होगा जी 1 से लेकर 6 तक. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 6 आएगा. भाई इवेंट ए सेट्स ऑफ प्राइम नंबर्स. भाई प्राइम नंबर का 2 3 5. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या होगा 3. इवेंट सेट्स ऑफ ऑड नंबर्स वो होंगे 1 3 5. नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 3. तो भाई जिनका होगा ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. जी भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा 3 और 5 जी. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का होगा 2 जी. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, वी गेट 1/2 जी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस, वी गेट 1/2. भाई ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस, तो 2/6 तो 1/3 आएगा. लिहाजा सिंस ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, भाई ओवरलैपिंग का मतलब इनमें कुछ मुश्तरक है, सारी डिफरेंट नहीं है. लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. भाई वैल्यूज पुट करें, हल करने के बाद वी विल गेट 2/3. जी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव भाई ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. भैया ए और बी क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है 5/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास 7/9. फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ये इस बोर्ड में आया हुआ है. भाई ये गिवन हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है 5/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 7/9. तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो भाई हल करेंगे तो क्या आ गया 5/9 हल करें.
कहता है राइट द फार्मूला फॉर द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ टू इवेंट्स। जी भाई राइट द फार्मूला फॉर द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ टू इवेंट्स। जी ये इस बोर्ड में आया हुआ है भाई राइट द फार्मूला फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ टू इवेंट्स। दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमारा फार्मूला होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डाइस आर थ्रोन ट्वाइस। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट्स शोन इन द फर्स्ट थ्रो इज 7 एंड दैट ऑफ सेकंड इज 11। सेकंड थ्रो इज 11। भाई देखें टू डाइस आर थ्रोन। Two dice are thrown. What is the probability that the sum of dots shown in the first throw is 7 and the sets of second throw is 11? ये इस बोर्ड में आया हुआ है भाई। two dice are thrown twice. The first sample space वो होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। भाई करते जाएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस का बनेगा 36। A be the event that the sum of dots first row is 7. So by 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। Number of elements in A क्या होगा 6। That's the probability of A क्या होगा number of elements in A divided by number of sample space. We get 1 by 6. For second row sample space is 36. B be the event that the sum of dots is thrown is 11. तो भैया वो 5 6 और 6 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या होगा 2। दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस वी गेट 1 बाय 18। भाई ए और बी का इंडिपेंडेंट है। भाई ए और बी का इंडिपेंडेंस दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो भाई हमारे पास आएगा 1/108। भाई वो आएगा 1/108। भाई देयर आर 5 green 3 red balls in a box. One ball is taken out. What is the probability that the ball is green? By what is the probability that ball is green? By there are 5 green 3 red balls in a box. One box is taken out. What is the probability that the ball is green? By number of green balls हमारे पास क्या 5। नंबर ऑफ रेड balls हमारे पास 3। भाई टोटल नंबर ऑफ balls हमारे पास क्या होंगे 8। दैट द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का होगा 8। A be the event that ball is green, then number of elements in A क्या होगा जी 5। दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 5 by 8। भाई देखें 3 balls there are 5 green and 3 red balls in a box। भाई एक बॉक्स में 5 green है और 3 red balls हैं। 1 ball is taken out, उनमें से एक बॉल निकाला आपने। What is the probability that the ball is green? What is the probability that ball is green? भाई what is the probability that ball is green? ये इन boards में आया हुआ है। भाई there are 5 green and 3 red balls in a box. 1 ball is taken out. What is the probability that the ball is green? By what is the probability that ball is green? By no problem. The number of green balls हमारे पास क्या है 5। By number of red balls हमारे पास 8 है। Total number of balls हमारे पास क्या होंगे 8। लिहाजा number of elements in sample space का होगा 8। A be the event that ball is green. तो number of elements in A का होगा 5। लिहाजा probability of A का होगा number of elements in A divided by number of elements sample space we get 5/18। जी हम इस बुक को स्टडी करेंगे। औलाद पर वालिदैन के हकूक बेअदब बेनसीब बाअदब भानसीब। ये बुक आप इन एड्रेसेस से हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, आपको बहुत फायदा होगा जी। ये बड़ा अहम नुकता है जी। अगरचे वालिदैन का अदब और एहतराम उम्र के हर हिस्से में वाजिब है, लेकिन जब दोनों शबाब की बहारों रनाइयों और तवानाइयों से महरूम होकर बुढ़ापे की जिंदगी गुजार रहे हों तो औलाद को चाहिए कि इनका ज्यादा ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि औलाद की जरा सी बेरुखी
वालिदैन के लिए दिल का रोग बन जाए। जब वालिदैन औलाद के रहमो करम के मोहताज हों तो हालात इन बेरहम थप्पड़ों में औलाद पर जिम्मेदारी आयद होती है। कोई ऐसा कोली या फेली रवैया इख्तियार ना करें जिससे वालिदैन को इज़ा पहुंचे, बल्कि इस वक्त इंसान अपने बचपन को याद करे कि जब वो अपने वालिदैन की शफकत और हुस्न सलूक का इससे ज्यादा मोहताज था। अपने नंगे बदन को डांप नहीं सकता था, खुद अपनी मर्जी से करवट नहीं बदल सकता था, अपनी गजा का बंदोबस्त नहीं कर सकता था, हत्ता कि अपने बदन के साथ लगी नजासत को नहीं धो सकता था। जी, इस बेबसी के आलम में बाप की शफकत और माँ की ममता ने शजर सायादार की माने इसे अपनी मोहब्बत की घनी छांवों से नवाजा। ये माँ ही थी जो बच्चे को पहले खिलाती थी फिर खुद खाती थी, जो बच्चे को पहले पिलाती थी बाद में खुद पीती थी, जो बच्चे को पहले सुलाती थी बाद में खुद सोती थी, जो अपने सर की चादर के एक कोने से बेटे के जूतों को साफ करती थी और अपने हाथों से बच्चों के पांव में जूता पहनाती थी। आज इस माँ के एहसानात का बदला चुकाने का वक्त आ चुका है। बस औलाद को चाहिए कि वालिदैन के अदब एहतराम का ख्याल रखे, क्योंकि जन्नत माओ के कदमों के तले है और रब की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है। सच तो यह है, औलाद अपने वालिदैन की जितनी खिदमत करे इनके एहसानात का हक अदा नहीं कर सकती, बल्कि अगर सारी कायनात की नेमतों का एक लुकमा बनाकर वालिदैन के मुंह में दे दे तो भी वालिदैन के एहसानात का बदला नहीं चुका सकता। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, बाप बेटे की मोहब्बत में कितना फर्क है? फरमाया, बेटा बीमार हो और लाइलाज मर्ज में गिरफ्तार हो जाए तो बाप इसकी दराजी उम्र की रो रो के दुआएं करता है, इसके बेबस में हो तो अपनी बकिया जिंदगी का इनाम अपने बेटे को दे दे, देकर खुद मौत को कबूल कर ले। लेकिन जब बाप बीमार होता है और लाइलाज हो जाए तो चंद दिन ही में बेटा मायूस होकर दुआ मांगता है कि अल्लाह मेरे बूढ़े वालिदैन को अपने पास बुला ले। कितनी अजीब बात है कि वफा के बदले में इतनी जफा। अल्लाह ताला हमें वालिदैन के अदब एहतराम और खिदमत और इताअत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत वाली और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए और हमारे अंदर जो कमी है कोताही अल्लाह मुआफ फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।